So very good morning children, welcome to the psychology classroom. I hope आप लोग studies अच्छे से कर रहे होंगे. Very few days are left. Time बहुत जल्दी भागता है. You have to hold on the time. Okay. So children, we are doing the revisions, and in terms of the revisions, yesterday I had discussed with you some of the objective type question from chapter first. Now today I am going to discuss with you the chapter second, which day before yesterday we are discussing the self and personality. So साथ ही साथ बेसिकली मैं आप सभी के साथ साथ मीन्स टॉपिक भी डिस्कस करते हुए चल रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग विद यू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन as well as in the some time I am going to discuss with you the case study. Okay, case study भी आपसे डिस्कस होगा, तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस हो रहे हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ चलेंगे. फाइन, चलिए. सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के टर्म में वी आर स्टडिंग द चैप्टर सेकेंड, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. In that, the lastly I had discussed with you trait approach. Trait approach हमने डिस्कस कर ली. Today I am going to discuss with you the psychodynamic approach. What? Psychodynamic. Okay, it is not properly visible to you, maybe because of the light. So I am going to write it over here. Psychodynamic. Psychodynamic approach is a tremendous approach in order to understand the person's personality. पर्सन की पर्सनालिटी को जानने और समझने के लिए साइकोडायनेमिक अप्रोच एक अमेजिंग अप्रोच है. दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज साइको एनालिटिक अप्रोच. इस अप्रोच को आप साइकोडायनेमिक अप्रोच को आप साइको एनालिटिक अप्रोच भी कह सकते हो. It can be also known as psychoanalytic approach. Psychodynamic approach can also be known as psychoanalytic approach. Okay, so psychodynamic approach and the psychoanalytic approach, the maximum work the psychodynamic and psychoanalysis was done by the Sigmund Freud. किसने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है वो नाम है. दैट इज वाई आई एम राइटिंग हियर ओवर इन कैपिटल लेटर सिगमंड फ्रेड. कौन है? सिगमंड फ्रेड है. साइकोडायनेमिक अप्रोच और वी कैन से दैट द साइकोएनालिटिक अप्रोच बोथ इज द गिवन बाय द सिगमंड फ्रेड. ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रेड ने दिया. दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच एंड वेरी अमेजिंग अप्रोच इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स पर्सनालिटी. पर्सन की पर्सनालिटी को अगर आपको अच्छे से जानना है तो टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच से ज़्यादा बेटर आपको साइकोडायनेमिक अप्रोच से पता चलेगा. सो साइकोडायनेमिक अप्रोच के अपने ही कुछ मोटिव्स थे, अपने ही गोल थे. साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है वो फोकस करता था कि अगर इफ़ यू वांट टू नो समवन्स पर्सनालिटी तो यू शुड रीड अबाउट देयर अनकॉन्शियस फीलिंग्स एंड मोटिव, बिकॉज द पर्सन्स अनकॉन्शियस फीलिंग एंड मोटिव ओनली टेल अबाउट सो मेनी थिंग अबाउट द पर्सन्स पर्सनालिटी. पर्सन की जो अनकॉन्शियस फीलिंग एंड मोटिव होती है वही पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है. ओके, so let's study about it in detail. There are some points which are related to the psychodynamic approach that you all should know. The first point, it is given by Sigmund Freud. So now, who is Sigmund Freud? Sigmund Freud है कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यू शुड नो ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन. सबसे पहले वो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे. देन ही बिकम अ साइकोलॉजिस्ट एंड मैक्सिमम थ्योरी ही डेवलप इन हिज क्लिनिकल प्रैक्टिस. उन्होंने ज़्यादातर अपनी थ्योरी जो है वो उनके जो पेशेंट वट एवर
the theories the Sigmund Freud have made, it was only an observation of the Sigmund Freud of his patient. Those patients who are coming in his clinic for उन्हीं को ये Sigmund Freud observe करते थे और उसी के बेसिस पे Sigmund Freud ने थ्योरी बनाई है. So, in his clinical practice, he developed the theory. He observed his patient, what kind of pattern they are showing, and on that basis, he have made this theory, psychodynamic approach and the psychoanalytic approach. Okay. Now, Sigmund Freud basically uses the two main techniques. And Sigmund Freud has a viewpoint that the person's unconscious motive and feeling is the source of the problem. If we are able to know someone's unconscious feeling and motive, we are able to understand the person. And that is why he gave more importance to the dream. उन्होंने कहा था कि dreams are the royal road to the unconscious. ड्रीम से हम पर्सन के अनकॉन्शियस के बारे में जान सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई सिगमंड फ्रॉइड हैज गिवन द टू मेन टेक्निक इन ऑर्डर टू रीड द पर्सन्स अनकॉन्शियस मोटिव एंड फीलिंग. एंड दीज टू टेक्निक आर, फर्स्ट टेक्निक इज फ्री एसोसिएशन. And second technique is dream analysis. First technique is free association and second technique is dream analysis. What is in free association? Free association is a technique, it is indicated from the name also, free. यानी कोई बाउंडेशन नहीं है. सो यस चिल्ड्रन, इन दिस वन ऑल्सो Sigmund Freud called the patient in his clinic and he suggests them to lie down on the couch or sit down. वो उनको कहते हैं या तो you comfortably sit down on the seat or you better lie down on the couch and ask them to say whatever is coming into your mind. वो उनसे कहते हैं कि आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं आप बताइए, यू हैव टू से. ओके. एंड ऑन दैट बेसिस द सिगमंड फ्रॉइड इज गोइंग टू जज अबाउट द पर्सन्स पर्सनैलिटी. वो बेसिकली अपने पेशेंट को कहते हैं कि ठीक है, फील रिलैक्स, फील कंफर्टेबल और आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसे बोलो. डोंट स्टॉप. वो जल्दी स्टॉप नहीं करते. And बोलते बोलते, by saying, the patient will come at a point where the patient will share so many things about him or her with the therapist. So it is a very good technique which was introduced by the Sigmund Freud. The second technique which he uses to understand the people's personality is dream analysis. Dream analysis means interpretation of the dreams. As I told now कि फ्रेड का ये मानना था कि dreams are the royal road to the unconscious. So that is why he interpreted the dreams. He said to his or her client that whatever the dreams you have seen, you just report it and write it down somewhere and then come it to me. I will do the analysis of that one. So that is our dream analysis. So this is the two technique which is given by Sigmund Freud. Psychodynamic approach I had discussed with you so many times. I think now you are able to understand the Sigmund Freud very well. Now this approach is divided into 4 parts. I hope free association और dream analysis आपको समझ में आ गया होगा. ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? क्या है फर्स्ट पार्ट? द फर्स्ट पार्ट इज लेवल्स ऑफ
consciousness, levels of consciousness. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. What is the second part? Structure of personality. First is the level of consciousness, second is the structure of personality. Third is the ego defense mechanism. Ego defense mechanism. Fourth is the stages of personality development. Stages of personality development. I hope it is visible to you. थोड़ा सा ये it is going downward. It is not very straight, but I think it is visible to you all. Levels of consciousness, structure of personality, ego defense mechanism, and stages of personality development. So ये psychodynamic approach इसी 4 में divided है. This 4 parts में divided है. 4 section में divided है. ठीक है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. ओके, सो 1 by 1 वी विल डिस्कस ईच पार्ट. हर एक पार्ट को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. You all know, children, what are the 3 levels of consciousness? 3 levels के बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा. This can be shown in this form also. Unconscious, pre-conscious, and consciousness. So the first is consciousness, pre-consciousness, and unconsciousness. This pre-consciousness को हम subconsciousness भी कहते हैं. आप सब बोलो या प्री बोलो, ठीक है. So first stage is consciousness, then subconsciousness, and then the last one is the unconsciousness. Unconsciousness is a state of completely unawareness. Unconscious है, unaware है. Consciousness यानी आप aware हो, अभी आप conscious हो. Right now you are in the conscious stage, you are completely aware. Unconscious, you are totally unaware. But pre-conscious and subconsciousness is a partial awareness. Something you know or something you don't know. That is a partial awareness. ठीक है? So these 3 levels of consciousness discussed by the Sigmund Freud. After understanding about the consciousness, the second part is the structure of personality. Our personality structure is divided into 2 parts. 3 parts. Structure of personality. Personality structure is divided into 3 parts. What are the 3 parts?
id, ego, superego. I written in very bold letters so that it is visible to you properly. Id, ego and superego. Although these structure do not have any kind of physical structure in your mind and body, they all are psychological structure. इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, जैसे आपके पास हैंड है ऐसा नहीं, आपके पास कहीं इड है, ईगो है, ये सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है. इड, ईगो, सुपर ईगो, हर एक का एक अपना डेफिनेशन है और अपना it has their own definition and explanation. Like id means the desire. Id is related to desire. Ego is related to reason. And superego is related to ideal. Now id is related to pleasure principle. ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है. ईगो इज रिलेटेड टू रियलिटी प्रिंसिपल. ओके फाइन. एंड सुपर ईगो इज रिलेटेड टू मॉरल प्रिंसिपल. ओके, सो दीज 3 पॉइंट्स यू ऑल शुड नो चिल्ड्रन. आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आने चाहिए. Now id, okay, so id, ego and superego. Id is that part of personality which deal with the immediate gratification of need. Id work on the pleasure principle. id वो एस्पेक्ट है पर्सन की पर्सनालिटी का जो डिजायर पे बेस्ड होता है. ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल उसे it is that aspect of our personality which require the things immediately. I want this one, so I want this one. That is an id. But ego is that aspect of the personality which work on the reality principle. Ego is related to the reason. Ego is related to the reason. Reason से related है ego. Ego work on the reality principle related to the reason. Fine. Now, we discuss about the id, we discuss about the ego. Superego. Superego is that aspect of the personality which is related to the morality, values. इट इज समथिंग पैरेंटल ऑथोरिटी. हम मॉरल प्रिंसिपल को पैरेंटल ऑथोरिटी करते हैं. सुपर ईगो यानी ईगो से भी ऊपर. इट डील विद द मॉरल वैल्यूज, आइडियल, हाउ टू बिहेव, व्हाट इज द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. सो इड को जो चीज चाहिए वो चाहिए. ईगो से बताता है कि ये चीज गलत है. The demand which you are making is wrong or the demand which you are making is right. And superego dried the ego. So this 3 structure of personality which was discussed by the Sigmund Freud. So the 2 things we had discussed about psychodynamic approach, levels of consciousness and structure of personality. Now we should move forward. The third part is the defense mechanism. The third part is the ego defense mechanism.
defense mechanism. Here the word is ego. Ego क्या करता है आपने पढ़ा है ना? Ego tells the between right and wrong. And sometimes ego also does a mistake. It becomes dominant over the ego and ego does the wrong thing. So in order to hide that wrong thing, ego defends itself and that is known as ego defense mechanism. मान लीजिए हमें पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, पर हमने हमारे ऊपर एक डोमिनेंट हो गया और हमने कोई काम गलत कर दिया. अब हम अपने आप को बचाते हैं. We use the defense mechanism. So ego defense mechanism is a way of reducing anxiety by distorting reality. रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हुए, रियलिटी को बचाते हुए हम अपने एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. नाउ देयर आर सम ऑफ द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच वाज डिस्कस्ड बाय सिगमंड फ्रेड. व्हाट आर द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म? फर्स्ट इज द डिनायल. Denial word is made from deny. Denial means not accepting the reality. मम्मी ने पूछा तुमने चोरी की? नहीं, मैंने तो नहीं किया. Denial, not accepting the reality. Second, repression. Repression word is made from suppression. रिप्रेस कर देना, दबा देना. हिंदी में से दबन भी बोलते हैं. रिप्रेशन इज फॉरगेटिंग और रिजेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ थ्रेट. जो भी मेमोरी जिससे हमें डर लगता है, जो भी थ्रेट प्रोड्यूस करती हैं, वो मेमोरी, बहुत सी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो थ्रेट प्रोड्यूस करती हैं. So those memories which are producing the threat for you, okay. So I hope it is clear to you. Id, ego and super ego तो clear हो गया आप सभी को. Ego defense mechanism में denial and repression is clear. Okay. The third ego defense mechanism is rationalization. What is the defense mechanism? Rationalization. Rationalization में क्या हो रहा है? What is happening in the rationalization? In rationalization, the people make excuses to manage their interpersonal interaction in trouble. कोई मुसीबत आ गई, ट्रबल आ गया, और अपनी इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को मैनेज करने के लिए they make excuses so that will the situation will be fine. So they are also using the ego defense mechanism. Like उनका ईगो कहता है कि you have done a wrong thing, और फिर उसको डिफेंस करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं so that our interpersonal interaction will not get into the trouble. So is it clear to you? Denial, repression and rationalization. Now the next defense mechanism which people used to do is projection. Projection का भी हम लोग यूज करते हैं. Projection means, what is the meaning of projection? Attributing the own traits on other. If you are angry, you ask to other one why you are being angry. Means projection का क्या काम होता है? Whatever is displayed on the that equipment, the same thing is displayed on the screen. Project करना. So projection में person अपने ही traits को, अपने ही attribute को दूसरों में देखेगा, कहेगा कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं. वो खुद वैसे करते हैं, फिर वो सेकंड पर्सन को ऐसे कहते हैं. तो दैट इज अ प्रोजेक्शन. नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज रिएक्शन फॉर्मेशन.
reaction formation. As it indicated from the name also, reaction formation यानी reaction में कुछ change आना. What is reaction formation? In reaction formation, the anxiety-provoking stimulus basically replaced and the person usually hide his or her true feeling. Reaction formation means just behaving opposite to his or her true feeling. आप अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, बट आप ऊपर से from outside you are very much gentle, very polite. So that is a reaction formation. Behaving just opposite to your true feeling. आपकी जो true feeling है उससे just opposite behave करना. So that is a reaction formation. So different kind of defense mechanism we have discussed. बहुत सारे defense mechanism हमने discuss किए. और everyone have their own quality. जैसे denial में क्या करते हैं, accept नहीं करते हैं reality को. Like मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने, just suppose a small child has broken away the glass, and all I can say that broke the glass accidentally, but he or she thought that if her mother knows about it, so he is going to have a severe punishment. So when the mother asks to him or her, he will deny it. Deny means मैंने नहीं किया ये. That is a denial. अपने आप को बचाना. Second is the projection. खुद attributing their own trait to other. Okay. तो हो सकता है वो बच्चा ये बोले मैंने नहीं किया, हो सकता है आपसे ही हुआ होगा, या आपने तो नहीं किया, इस तरीके से. रिएक्शन फॉर्मेशन बिहेविंग जस्ट अपोजिट टू ट्रू फीलिंग मीन्स वो डरा हुआ है बहुत अंदर से, डर है कि मम्मी डांटेंगे या मारेंगी या पापा डांटेंगे. ओके, व्हाटएवर the boy and the girl, that child has the fear of the punishment from their parent, and the feeling is that very fear is feeling. But from outside, from outward, the child is very confident, very smiling. Okay, so just behaving opposite so that nobody can guess that he has done it or she has done it. So projection, reaction formation, denial, rationalization, making excuses. Okay, putting that blame onto your sibling. उसने किया, मैंने नहीं किया, उसने किया. Excuses. Repression, भूल जाना, मुझे नहीं पता, I don't know. Who has done this one? Forgetting, completely forgetting, rejection. So these are some of the defense mechanisms which people used to manage their interpersonal interaction in trouble. So the psychodynamic approach is divided into 4 parts. The first is structure of personality, the level of consciousness. Second is structure of personality, and third is ego defense mechanism. Now fourth is the stages of personality development. Stages of personality development. There are 5 stages which Sigmund Freud had discussed about. Okay, 5 stages. These 5 stages I am going to discuss with you the next video, and as well as I also discuss with you the new Freudian approach. So be ready for that one. For the next video I will definitely discuss, but the 3 parts I had discussed with you, and I had done the revision. I just hope you all have done the revision with me. आप मेरे साथ रिवीजन करोगे और किया होगा. और प्लीज स्टूडेंट लर्न करिए, सॉल्व मोर एंड मोर MCQs and objective type question. Prepare yourself for your board exam.
Okay, thank you so much children for carefully observing this video.